हाय गाइस, वेलकम टू एस बॉलीवुड। कुबरा सेठ के बर्थडे पे उन्होंने उनकी बुक लॉन्च की। बुक लॉन्च पर काफ़ी सारे सेलेब्स आए। विद्या बालन, कोंकणा सेन, सुमोना और मंजरी फडनीस। आइए देखते हैं इन्होंने कुबरा के बारे में क्या कहा। नहीं ले सकते बाहर जाके पड़ेगा। हाँ बुला रहे विनोद। हाँ मैडम अंदर ही आ जाइए। विद्या जी अंदर आ जाइए। वीडियो मार देते हैं। विद्या जी वाले बाहर ही रुक। हाँ इधर ही करेंगे शुरू किए। मैडम जी पहले फोटो आ जाओ। हाँ उधर करेंगे बैनर पे। मैडम जी एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब यूट्यूब आ गया भाई। क्या वो तो भी राइट साइड दादा थोड़ा पीछे जाओ ना। वो तो भी राइट साइड विद्या जी यहाँ पे यहाँ पे वेट 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 विद्या जी मैम एक सोलो सोलो करते हैं। सोलो चिल्लाओ मत यार। मैडम जी इधर देखिए। मैडम जी इधर देखिए। सेंटर सेंटर चलो हो गया तो और जाओ। चलो भाई हो गया तो चालू कीजिए। विद्या जी सेंटर पे देखिए। अरे कवर दिखाना बोलना। आई मैम साथ में। हाँ चलो चलो निकालो। या वो तुम भी सेंटर अरे विनोद हिल मत करो भाई। वो हिलता है। Thank you, madam. Thank you. Boys, be cool. Ladies and gentlemen, I present to you the editor of my very heartfelt, beautiful, honest book, Trisha Bora. Hi everyone. Hi everyone. Okay, let's begin. Thank you. Thank you. Thank you. I would also like to thank Miss Balan, our guest of honor, and Varun for taking the time to come here and be with us. I'm going to keep this very short. I just want to say that as an editor, it's one of the great joys to find an honest voice. I'm a slow burn with books. I read them over a period of time. This one I kind of went through a lot faster. Okay, I got to read this back to back and right there. And it's one of those books when I kept reading it and I'm like, I feel like I discovered many sides of you beyond discover about her, which you didn't already know when you read the book. Firstly, hi everyone, and a big congratulations, Kubbra. You know, I have to say, Balan, I loved the book, and not because I'm sitting here. I agreed to come here over a message because I'm so fond of Kubbra. But you know, and I think it's actually titled Open Book because I don't know of another book that's as open as this is. I was amazed by the kind of things she's shared. And you know, I know that each of us who's made it or come thus far has a story.
but it was very interesting to look, because Kubbra, today is someone who's constantly laughing. She's, like, are you embarrassed? Are you shy? I'm just Yes, like it's, gobsmacked. No, but Yes, she's very me. she's like a live wire, and then when you read her story, it's amazing. You feel that much more. I think I feel like I know her a little more, and I think it takes a lot to bear your soul the way she has, and hats off to her. I don't know, how everyone has reacted to what she's written. That's a separate conversation for. I don't know. No, because I think it's just amazing the kind of things she shared about family, about friends, about her journey in the industry, about her journey otherwise, in her teens, and I think it's just incredible. I don't want to say too much because I think it has to be read. I read it at one go. And very honestly, I'm not so much of a reader anymore. I find it, I don't have the bandwidth to read most of the time, but I just started reading this and I was like, wow, this is a person behind or, within Kubbra. I think it was really revelatory and in a wonderful way. I have to ask you this. There's always that first day when you start writing a book. What was day one? Day one, blank page. What did you set out to write on that first day? Oh well, the first day is what I wrote. Was what was meant to be the first chapter, but became the prologue, which was about the rogue geography of my teeth. And I thought it was so impersonal yet personal that I could address it with absolute clarity. And I just found myself to be like that child sitting on that dentist chair with my feet swinging. I remember my orthodontist used to come from Erode to and Erode is a very small town in the south of India. It's very small. And the best orthodontist was from Erode. So I was like, amazing. This is great. So I don't know, I thought it was impersonal, it was detached and yet so attached to me, because most people look at me today like, oh, you've got such a great smile and you smile so well, and nobody asks me if I fixed my teeth, because they think it was God's gift. It wasn't. It was my Erode orthodontist who fixed my teeth. Yeah. I also think she said something beautiful, which is that she was detached and yet there was something very personal, and that's what I found about the book. I find that it made me smile, it made me laugh sometimes with her observations or the way she describes her experiences, some maybe even terrifying experiences. She's got, few. But I think it's such it is an objective, almost like a spectator's viewpoint, yet it's something she's been through. So I think that I found wonderful about the book, very unique and very her. It's her voice all the way. Something which actually is in the last chapter, you're saying it's like having a conversation with your inner self, which most of us don't do. We don't talk to the person inside, and as we kind of grow older, there's layer after layer that kind of comes in something that person. Oh, you underline? Yeah, just so. That's for my mom, right? Yeah, in the chapter about her mother, Yeah. she says, she's my queen and I'm her subject, which is both a badge of honor and my cross to bear. And every child, and especially every daughter, I think, will identify with this, because it is so beautifully put, and it's so true for every mother-child relationship, I'd like to believe, but more so for a mother-daughter relationship. So there were lots of things. I thought, the entire chapter about her mother was, she spoken with so much honesty that it was like, because especially here we glorify the mother to an extent where she ceases to be real, anymore, like a living, breathing being. But she has really made us see her mother also as an individual and as a woman and as a momager at one point, and so many different things, and I thought that was just amazing. So there were little things I underlined, because they really, even the way she had described it or the way she had worded it made an impact on me. That's so true, right? And I feel also in some point,
to write about people closest to you, connected to you, family especially becomes tougher. So I published my book earlier this year, and for me the toughest part to write about how do I write about parents. I didn't name it because I didn't want to be that person, but like. I am always this person. But it's a tough thing. But I felt that there were some lines in the book. For me, there's this one line about how your voice gets diluted when you kind of go to larger spaces. It's like when you go from a smaller space to a larger space, how your voice gets diluted. For me, that was like something that rang true because I come from like a small town, coastal Andhra Pradesh, so I totally get that. So when you kind of think back on your voice, South Indians do. Guys, South Indians raw. That is true. I have to agree with that. Yes. Tamil, yes. Oh, see that. Now you don't go like, oh, Madrasa. No. Southpaw. Yeah. But when you think back on your voice, do you feel your voice, the inner voice has evolved? सर थोड़ा साथ में आ जाइए विनोद आगे आगे मत जा यार अरे रुको गाना बज रहा है Oh, yummy. कट गया अभी क्या फिर से काटो Happy birthday, everyone. एवरीवन बोल ना भाई फिर से कराओ अरे नहीं कुछ नहीं चाहिए कुबरा जी मैडम जी आप प्लीज पीछे आएंगे हाँ बुक के साथ अरुण अरुण अरे क्या चलेगा इसमें फोटो नहीं चाहिए दूसरा इधर से इशारा करके मैम मैम मेरा भी पहले इशारा से वेट 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 पहले इशारा से Okay, uncle. See you. हाँ जा रहे How are you sexy? अमित वेर इज अमित अमित so the man behind Amit, this is so beautiful. एक स्टेप मैम थोड़ा पीछे एक स्टेप थोड़ा मैम यहाँ पे मैम इधर ये कैमरा में वो ऐसे रखो ओह ओके डन एक सेकंड हाँ डन थैंक यू जी मेरे लिए बहुत स्पेशल है वो इसलिए बिकॉज यू नो कहते हैं ना एक एवरी ईयर इज़ अ माइलस्टोन सो आई थिंक दिस इज़ अ रियली रियली ह्यूज माइलस्टोन फॉर मी बिकॉज मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद कुछ तो किया है लाइफ में कि उसके बारे में लिखा जा सके ताकि लोग उसके बारे में पढ़ सकें एंड फॉर मी इट्स अ मोमेंट ऑफ ऑनर एंड प्राइड कि मैं अपनी लाइफ को किसी पर्दे के पीछे नहीं देखती हूँ हम काम पर्दे के पीछे करते हैं और मगर ये जो मेरी कहानी है ये आपके लिए एज ऑनेस्टली एज रॉ एज आई कैन बी एंड एज कैंडिड एज आई कैन बी मैंने इस अपनी कहानी को उस तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है एंड इट्स अ रियली रियली बिग डे फॉर मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सब यहाँ हैं क्या आपको कैसा लग रहा है
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं अपने करियर की ट्रजेक्टरी को देखूं तो ऐसा ही कुछ हुआ था माहौल जब मैंने 12 साल पहले रेडी की थी। तो ऐसे ही कैमरास लगे थे मेरे सामने, मुझे पता नहीं था कौन से कैमरा में देखो, किसको क्या जवाब दो, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कोई इंटरेस्टेड भी है मेरी बात सुनने में। तो ऐसा लगता था। मगर आज आप जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से आप मेरे पास आए हैं, उस प्यार के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू। आई मीन हर बर्थडे पार्टी की तरह ये भी बर्थडे पार्टी है। थोड़ा केक वेक खाएंगे, थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ा डांस वांस करेंगे, थोड़ी ओपन बुक के बारे में बातें करेंगे और फिर अपने अपने घर जाके सो जाएंगे। एब्सोल्युटली। ऑल आई कैन से इज़ आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने सीक्रेट गेम्स की बात की हैं, हर एक प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है। जैसे कि हाल ही में आर के रिलीज़ हुई है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट फिल्म। और थोड़ा तो दिल दुखता भी है कि इतनी अच्छी फिल्म को थिएटर स्क्रीन्स नहीं मिल रहे हैं, कोई देखने नहीं जा रहा है। फिर हम लोग बोलते हैं कि अच्छा सिनेमा इंडिया में बन नहीं रहा है, या फिर हिंदी सिनेमा अच्छी फिल्में नहीं बना रहा है, मगर आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू। तो मेरे लिए दिस इज़ लाइक अ रियली इम्पॉर्टेंट मोमेंट टू से कि नहीं यार, हम अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जाओ ना, देखो ना। आप हमारा प्रोत्साहन करेंगे तो हम और भी अच्छी फिल्में बनाएंगे। तो ये एक चीज़ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे देखेंगे फ़र्ज़ी में, एक और शो आ रहा है शहर लखोट, तो मैं उसकी शूटिंग वापस शुरू करूँगी अक्टूबर नवंबर में। फिर मेरी एक और फिल्म आ रही है जिसमें मैंने प्रतीक बब्बर और शयोनी के साथ काम किया है। तो काम तो है, अल्हम्दुलिल्लाह काम तो है। तो जो मैंने एक साल हमारे कंट्री के बाहर बिताया था डूइंग फाउंडेशन, आई थिंक इस साल मैंने उस सब का गर्ज मतलब कंप्लीट कर दिया है। तो मैं मतलब हर रोज़ काम कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मेरे डैड हैं यहाँ पे, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज प्रेजेंस। मेरी माँ ने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा, ये किताब लिखी तुमने बट हैव यू हील्ड? And I thought that was a really, really close and a very important question to be asked. And the answer is yes, through writing this book, I have healed. तो मेरे लिए अभी वो पुरानी बातें, पिछली बातें कोई मायने नहीं रखती, बिकॉज मेरे लिए आज से जो हर दिन होगा वो नया दिन होगा। So I think for me it's a really important day. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. मैंने बोला था ये मेरे लिए नहीं, ये करण कुंद्रा के लिए आए सही पकड़े है ना। Thank you guys. अरे तुम पूरा कैमरा आगे क्यों घुसा दो? कुबरा लुक हियर। Thank you guys. Thank you. You haven't taken everybody.
एक मिनट मैम Yeah, both of you. Sumona solo Solo. Yeah, one more. Thank you. Thank you.